So, hello Sunbeamers, I hope you all are fine. Today we are going to continue the rest part of the chapter. Yesterday we were not able to continue due to Mahashivratri, but today we will continue and try to finish this chapter. Okay. So we have already completed two features of living things, that is reproduction, that is your cell and movement. The third feature is your growth. Third feature is your growth. So every organisms grow in their size. Suppose when you were 1 year old, you were like that, baby. In 18-year-old, you will be like this. When you will grow 15 years, you will grow a little taller. 20 years, you will grow more taller. And in 40 years, you will be like this, man. Okay. So your body parts grow as age increases. Okay. See, when you're a 1 year old baby, you are very small. Your hands were small, your legs were small, your height was small. But when you came for 11-year-old or 12-year-old, your height increased, your hand increased, your legs increased. Why? Because the size of bones, the length of bones increases. The bones became longer. Bones became longer. Muscles became larger, and blood in the body also increased. Blood in our body also increased. Okay. So growth is the very important feature of living things. Now, here what is written, you see. Bones increases, muscles become larger, and amount of blood in our body also increases. Okay. What all increases? Bones, muscles, and blood. Next part is tiny chick hatches from egg. It gradually grows in size to become a hen. Suppose there is a chick here. It came from an egg. As time passes, it becomes a hen. So what happens? What is the process called? Growth. उसका body size बढ़ा, bone बढ़ा, feathers बढ़ा, height बढ़ा, weight बढ़ा, सब कुछ बढ़ा. तो that is the feature growth. Let's move next part. See how it is occurring. You see, from the egg the chick came, and from the chick it became a hen. So this process is entirely called growth of the organism. All organisms grow up to a certain age only. All organisms grow up to a certain age only. Like in humans, basically your height grows up to 20. Not even 20, up to 18, but maximum up to 20. After 20, your height will not grow. Your bones will not grow. Your hair may grow. Hair will grow. You will cut again it will go. But your bones, muscles, they all don't grow naturally. Okay. Naturally, they don't grow. And next point is growth in plants is faster and easier to observe. Like you see, plant, in case of plant, this plant is a shorter one. As time passes, it grows. In the picture, you can see, as time passes, it grows. As time passes, the plant grows in height, more number of leaves came. After some time, it will grow into a tree, flower will come, fruit will come. So growth is a very natural phenomenon. Okay. Oh, I'm sorry. Yeah, we are back again. Sorry for the disturbance, my dear children. I'm really very, very sorry. Okay, fine. Now, oh, what is happening? Yeah, fine. I am very, very sorry. Yes. So we have basically learned about growth. All living beings, this one is important. All living beings, plants and animals grow. Okay. Yeah. So now next part, fixed lifespan. You can see over here.
Fixed lifespan. Fixed lifespan. What about fixed lifespan? The period from birth to death. Period from birth to death is called lifespan. एक इंसान का जन्म, birth to death. Very, very sorry for the disturbance that has occurred. Birth to death is called growth. What it is called? It is called as growth. The period from birth to death is called as lifespan. The period of birth to death is called as lifespan, not growth. Growth also hota hai, lekin this is called as lifespan. The period from birth to death. Okay, it's called as lifespan. And suppose it is different from different organism. Okay, like the marigold plant is a seasonal plant which lives for a few months only. Its lifespan is few months. Marigold plant lifespan is few months. That one you can note it down. The lifespan of marigold plant is few months. Okay, that way it is a seasonal plant. Neem plant or people plant continue to grow for many years, like 100 years. Okay, people plant and neem plant lifespan is 100 years, many than marigold. Okay, even more than humans. They are more than humans. Now, all animals live up to a certain age after which they die. All animals, they live up to a certain age only. कुछ साल तक जीते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, including humans. What you have learned? Marigold plant is a seasonal plant. Its lifespan is few months. People plant, neem plant का lifespan 100 years है. अब animals का भी कुछ fixed lifespan होता है, जैसे कि cat का lifespan कितना है? 35 to 50 years. This part is important. You have to remember. Cat lifespan is 35 to 50 years. Horse lifespan is 50 to 60 years. Elephant lifespan is 50 to 65 years. Dog lifespan is 20 to 30 years. Okay. Human lifespan is 80 to 100 years. Eagle lifespan is 80 to 90 years. Parrot is 10 to 15 years. Mad fly is 1 day. Mad fly may fly only, live for 1 day only. They die after 1 day. Tortoise is 150 to 200 years. Okay. Tortoise 150 to 200 years. Then wheat is 5 months, seasonal plant. Sequoia is your California conifer. It is your 3000 to 4000 years. Banyan tree is your 2000 years. These all things you have to remember. Okay, all things you have to remember. Now, generally, all lifespans are categorized into living and non-living. All lifespans are categorized into living and non-living. मतलब living being का कुछ lifespan होगा, non-living being का कुछ lifespan होगा. Living being का lifespan क्या होता है? Fixed होता है, birth से death तक. Okay, वो एक आदमी जो है बेसिकली 80 से 100 इयर्स तक ही जीता है. हाँ, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है उससे पहले मर जाता है, लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं होता, वो कोई डिजीज के वजह से होता है. लेकिन नेचुरली 80 से 100 तक एक आदमी का डेथ हो जाता है. ओके, नाउ बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देयर आर three things: living thing, non-living thing, and dead thing. The dead thing. Okay. For example, you may call leather or a log of wood as non-living, but biologically they are called dead. Okay. Why dead? Because they do not have life. What we call, you see, according to biology, we call living thing and non-living thing. But non-living thing, as they have no life, they are also called as dead. Why dead? You will come to know after 1 year in class 7. Because they don't have any living cells. They don't have any properties of living being. So they are called as dead. Non-living or dead.
Okay. Now is nutrition. I think I have completed lifespan. Okay. Now is your nutrition. Nutrition means the food that you will take to keep your body healthy is nutrition. Okay. When you starve for a day, what is starve? Upwas. Starve means upwas. In evening, by the evening you start feeling weak. But when you take food, you feel energetic. Why? Because food contains nutrients like carbohydrates, which gives you what? Energy. Which gives you energy to do daily works. Okay, to do daily works, foods give nutrition. Food give you energy. It contains nutrients. What it contains? Nutrients. Okay. How different animals have different nutrient habits. Like rabbit, they eat grass. Deer eats grass to get energy. Lizards feeds on insects to get energy. We basically humans feed on plants. Some are also non-vegetarians feed on animals to get energy. So they are all the sources of energy, the sources of nutrients. Okay, they are the sources of nutrients. The food we take are the sources of nutrients. Now, green plants make their own food. Green plants make their own food. वो अपना food खुद बनाते हैं. How they make their own food? They take simple things like carbon dioxide and water to make their food in form of starch. This process is called as photosynthesis. I've already told you in class 4. This process is called as photosynthesis. Okay, PSY is a short form. This process is called as photosynthesis, in which the green plants take carbon dioxide and water to prepare food and store in the form of starch. Store in the form of starch. They prepare food in the form of glucose, but they store in the form of starch. Okay, now this process of photosynthesis requires energy. What this process of photosynthesis require? Energy. From where it get energy? Sunlight. From where it get energy? Sunlight. So green plants are also called autotrophs. What they are called? Autotrophs. Autotrophs means self-food makers. What is the example of autotrophs? Green plants. Please use the word greens because there are some plants which do not perform photosynthesis because they are not green. Okay, they do not contain chlorophyll. Okay, next part is autotrophs we have done. Next part is heterotrophs. Yes, students, if you have any doubt, you can answer me in comments. You can ask me in comments. I will surely reply it. Okay. Some animals directly eat the plant parts and some feed on other animals, which in turn eat plants. इसका मतलब some animals are there like carnivores are there which eat animals. This carnivore did eat animals. Suppose it is an animal. Okay, it is an animal, and this animal feeds on plants. This plant P. So this animal is called heterotroph. Sorry, this animal is called herbivores, which eat plants, and the carnivore eat the flesh of the animal. Okay, so animals are heterotrophs. Animals does not prepare their own food. They take their food from plants or other animals. Animals are heterotrophs, not autotrophs. Okay, animals are heterotrophs. Okay, as they take food directly or indirectly from plants. Directly means like herbivores, deer. 1 minute. Like in case of deer or cow, deer basically, in case of deer, what happens? They eat plants, so they take directly food from plants.
and the lion eats deer. So lion eats deer which has eaten plant, मतलब जो plant को खाया है उसको lion खाया है, तो indirectly वो plant से food लिया है. So basically with this your heterotrophy is over. Okay, I hope you have understood and you have already learned it in your class 5. So all, now this is the crux point. All living things need food to acquire energy. All the living things, क्या चाहिए? फूड चाहिए. क्यों चाहिए फूड? एनर्जी के लिए. किसके लिए? एनर्जी के लिए. ओके फाइन. नाउ नेक्स्ट पार्ट is your, I think we are done. Yes, respiration. What is respiration? Breathing. To breathe. Okay, so energy provided. Okay, this one not important. The process of release of energy by the burning of food in our body is called respiration. इसका मतलब है कि अगर हम फूड खाते हैं तो हम क्या एनर्जी लेते हैं. तो अगर हम एनर्जी लेते हैं तो उसको हम बाहर भी करेंगे, रिलीज भी करेंगे. तो दैट प्रोसेस ऑफ रिलीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो दैट वी कैन गेट ऑक्सीजन बाय इनहेलिंग. एक्सेल करने के टाइम में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं और कुछ एनर्जी भी देते हैं जो कि रिलीज हो जाता है. ओके, तो बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग मतलब बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. वो बर्निंग ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन चाहिए हमें. सो ऑक्सीजन जाता है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, उससे कुछ एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी को कुछ हम यूज करते हैं, कुछ हम गिव आउट करते हैं. सम एनर्जी भी गिव आउट. सो दैट गिव आउट एनर्जी गोस इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन भी होता है, वो तो वेस्ट में चला गया. रेस्पिरेशन से एनर्जी को गिव आउट करते हैं. ओके, एज पर योर टेलिना बुक. ओके, so respiration in detail you may read in class 6 or 7. So this is all about respiration. And that we say we are breathing. Okay, we are breathing. See, even while we asleep our step constantly keep rising and falling. We think continuously. एक इंसान के जन्म से एंड तक होता है. कंटिन्यूसली वी ब्रीथ एंड हार्ट बीट ऑल्सो कंटिन्यूसली हैपेंस. Okay, it is a very important process. Without that we can't get oxygen. Okay, like so how animals breathe? We breathe by our nostrils in our nose. हमारे नोज के नॉस्ट्रिल्स से हम ब्रीथ करते हैं. प्लांट्स इससे ब्रीथ करते हैं स्टोमाटल पोर से. किससे ब्रीथ करते हैं? स्टोमाटल पोर से. ओके, एंड लीव्स में जो होता है प्लांट जो है वो अपना स्मॉल माइन्यूट पोर्स से ये करते हैं. एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज एंड प्लांट्स ब्रीथ through the minute pores on the leaves and stem. Clear है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को जाते हैं. That is your excretion. Excretion. What is excretion? Removal of harmful nitrogenous wastes. Nitrogenous waste मतलब क्या क्या हो गया? जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. क्या क्या हो गया? वो यूरिया, यूरिया हो गया आपका एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट. और क्या हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिक एसिड. इसका रिमूवल होना बॉडी से बहुत जरूरत है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट. ओके, एंड uric acid and urea, basically these two are the important nitrogenous waste of our body which we don't need, and it has to be released from our body by the kidneys. Which releases it, which excretes it out, which throws it out, it's the kidney. So let's read it in detail. थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं बस. Yes, now it's, I think it's clear. Body activities of all organisms produce certain nitrogenous waste. Every मतलब कुछ यूजफुल वर्क होता है तो उसके साथ कुछ अनयूजफुल वर्क भी निकलता है, मतलब जो कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होता है. उसको किसके फॉर्म में रिलीज करना है? एक्सक्रीशन, वेस्ट के फॉर्म में रिलीज करना है. ओके, so these harmful substances are thrown out of the body through the process called as excretion. So the process called as excretion.
and this excretion are in animals is usually in the form of urine. वो किससे फॉर्म से निकलता है? यूरिन के फॉर्म से निकलता है। यूरिन के फॉर्म से या आपके जो है मतलब स्टूल के फॉर्म से, पीसेस के फॉर्म से वो हार्मफुल वेस्ट जो है वो निकल जाता है बॉडी से। नहीं निकला तो दिक्कत होगा बॉडी को, बॉडी में फेस प्रॉब्लम्स। नाउ प्लांट्स आल्सो थ्रो देयर वेस्ट, प्लांट्स आल्सो थ्रो देयर वेस्ट इन फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में प्लांट हमारा अपना बॉडी वेस्ट को थ्रो आउट करते हैं, लेकिन वो बॉडी वेस्ट हम लोग यूज करते हैं। जैसे गम हमारा काम में आता है हम पेस्ट करने के लिए और कुछ करने के लिए, रेजिन्स भी काम में आता है। तो बेसिकली we use this waste of plants in different ways, but our waste is of no use. Okay, that is of no use. Now next, eighth point is your responsiveness. Eighth point is your responsiveness, ninth is reproduction, and then the chapter will be end. Okay, eighth point is your responsiveness. Responsiveness मतलब sensitivity. हम सराउंडिंग को कैसे सेंस करते हैं, व्हाट वी सराउंड। लाइक मैं अगर एक बंदा को एक छापड़ मारूंगा तो उसको सेंस होगा कि हाँ मुझे पेन हो रहा है, या अगर मैं आंख में उसका कुछ चिली फेंक दूंगा तो उसको जलन होता है, तो वो क्या सेंस करता है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। ब्रेन को वो मैसेज जाता है कि हाँ आंख में पेन हो रहा है। या अगर मैं इसको जोर से मारता हूँ तो उसको भी वहां पेन होता है, तो वो ब्रेन को सेंस जाता है, ब्रेन को क्या जाता है, स्टिमुलस जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिम्युलस। एंड हम लोग जो उसके लिए करते हैं ना, जैसे तुम्हें कोई जोर से मारा तो तुम्हारा वहां पेन होगा तो तुम हाथ ऐसे से रगड़ते हो कि नहीं, या कोई आयरन के पास तुम जाके छू लिए तो तुम अचानक से हाथ क्या करते हो, वापस कर देते हो। तो वो क्या है, तुम्हारा रेस्पॉन्स है कि हाँ स्टिमुलस हो गया, ब्रेन को चला गया, तो वो ब्रेन मैसेज भेज दिया, क्या भेज दिया कि हाथ बाहर निकालो। तो दैट इज योर रेस्पॉन्स। स्टिमुलस इज द हैपनिंग और द चेंज इन द सराउंडिंग। सब चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिम्युलस। चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिम्युलस। क्या बोलते हैं, स्टिम्युलस। एंड उसके लिए जो तुम काम करते हो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। लाइक आयरन का बात बोला, आयरन के प्लेट के पास अगर तुम्हारा हाथ चला जाता है गलती से तो वो होता है स्टिम्युलस, और तुम्हारा हाथ जो बैक करता है, तुम जो बैक करते हो हाथ को, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस या रेस्पॉन्स। तो रिएक्शन टू द स्टिम्युलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम लोग लिखेंगे भाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, सडन हैपनिंग इन द एनवायरमेंट ये क्या है, स्टिम्युलस, सडन हैपनिंग। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन टू द स्टिम्युलस। रिएक्शन टू द स्टिम्युलस क्या है, रेस्पॉन्स है। क्या है, रेस्पॉन्स। क्या है, रेस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है। हम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, आपको काम आएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। द मोमेंट योर टीचर एंटर्स द क्लासरूम यू इमीडिएटली स्टैंड अप। ओके, ये क्या है, टीचर का आना क्या हो गया, इसमें स्टिमुलस कौन सा है, रेस्पॉन्स कौन सा है। टीचर का आना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। तुम्हारा स्टैंड अप क्या है, रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस मतलब सडन हैपनिंग, रेस्पॉन्स मतलब तुम्हारा रिएक्शन। तो टीचर का आना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और तुम्हारा खड़ा होना क्या हो गया, रेस्पॉन्स हो गया। Showing a stick to the stray dog, the dog quickly run away. तो स्टिक दिखाना क्या हो गया, स्टिक दिखाना क्या हो गया, क्या बोलते हैं प्रोसेस को, स्टिम्युलस, और डॉग का रनिंग को रेस्पॉन्स। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट लार्ज वन ट्री स्टार्ट्स ड्रूपिंग। तो टच करना क्या हो गया, स्टिम्युलस, ड्रूपिंग हो गया रेस्पॉन्स। तो यही है फॉर्मूला। मैं बुक का तो अभी है पीडीएफ तुम्हारे पास, तो तुम पढ़ लेना क्या क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली दिया है, in the above example showing the stick to the dog touching the leaves and light falling on the plant is stimuli, stimulus जो भी बोलो तुम, ये प्लूरल में स्टिमुलस बोलते हैं, सिंगुलर स्टिमुलाई होता है। एंड सॉरी,
प्लूरल में स्टिमुलाई बोलते हैं, सिंगुलर स्टिमुलस होता है. सो ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई. ऑल द लिविंग बींग्स, कुछ कुछ लिविंग बींग्स होता है जो स्टिमुलाई को रिएक्ट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सडन चेंज को रिएक्ट करता है. द लास्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन मींस? देखो, एक एक लिविंग बीइंग का एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है. उस लाइफ स्पैन में वो क्या करता है, अपना न्यू यंग वंस बनाता है. लाइक एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन क्या अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा, बेबी प्रोड्यूस करता है वो अपना, ठीक है. So that is reproduction. Reproduction means to produce offsprings, means babies, young ones. Offspring produce करता है वो अपने लाइफ में, ठीक है. तो how it happens? Let's see. Every living being has a definite lifespan. If the organism simply live and ultimately die, its race would come to an end. अगर वो मर जाएगा तो उसका कोई यहाँ पे रेस नहीं रहेगा, उसका कोई वंशज यहाँ पे नहीं रहेगा, इसका कोई बेटा या बेटी कोई नहीं रहेगा. तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपना एक किड रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपना एक ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो दैट इज ऑल रिप्रोडक्शन. डिटेल यू विल लर्न इन क्लास 7. ओके. So how in basically there are two kinds of reproduction. One is sexual and one is asexual. In sexual reproduction, there are different methods of sexual reproduction. Also, there are different methods of asexual reproduction. All things you will basically learn in class 7, I think. So let's stop this topic here only. Now, next. All plants and animals reproduce to give birth to their own kind. सारे plants and animals क्या करते हैं, reproduce करते हैं. Like your cow क्या देता है, calf देता है. Chicken क्या देता है, sorry, hen क्या देता है, chicks देता है, chickens देता है. So that is all your reproduction. So basically अगर हम बात करें 9 properties का, तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं. First property was cell. Basic unit of life of an animal living, cell, and the center compartment of the cell is your nucleus. Second is your movement, moving from one place to another. Plants do not move from one place to another entirely, but animals move. And in some plants, example I have told Lajvanti, drooping of the leaves and petals of the flower closing down at night and opening in the morning. So next is what, that was your movement. वो हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास पढ़े थे, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आफ्टर दैट, आफ्टर मूवमेंट वी हैव लर्नड अबाउट ग्रोथ ऑफ योर bones, muscles and blood amount also increases. Growth मतलब body size में increase. After growth what happens? After growth I have told about your responsiveness, responding to the stimuli, external change. And okay, so growth. फिर हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन. मींस we have food to get energy. Autotrophs, heterotrophs also I have told you. The plants with the organisms make their own food, they are called autotrophs, and heterotrophs means the organisms will depend on plant indirectly or indirectly for the food. That is your heterotrophs. Now next, after nutrition we have told about respiration, and then is your excretion. That one also I have told you. Respiration means breathing, okay, to pass the energy or to give out the energy. And excretion means taking out of harmful substances from the body, that is nitrogenous waste from the body, is called your excretion. After that we have learned about responsiveness, that is responding to the stimuli. After that is your reproduction. Okay, these are the 9 characteristics of you living being. So कुछ plants and animals का difference है, उसको हम समझेंगे अभी अच्छे से, ठीक है. तो अभी इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा समझेंगे इसको, ठीक है. इसको सब ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. चलिए इसको यहाँ पे 6 पॉइंट दिख रहा है सबको, यस, विजिबल. इसको जो है थोड़ा सा काट देंगे, चलो अब दिख रहा है सबको, फाइन. अब देखो,
Okay. Now, animals move from one place to another in search of food. Plants do not move from one place to another in search of food. Okay, they make their own food. तो ये difference हो गया. Animals जो है एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं in search of food, but plants do not move and are fixed at one place. Okay, and they make their own food. So two difference हो गया. First difference is animal move from one place to another, and plants remain fixed at one point. They do not move from one place to another. Second point is animals do not make their own food, but plants make their own food. Now next point number 2. Animals cannot prepare their food with the help of carbon dioxide and water, but plants prepare their food with the help of carbon dioxide, water, okay, and presence of sunlight. So photosynthesis का point हो गया basically. Animals अपना food नहीं बना पाते हैं, plant बना पाता है. Third point is animals do not have chlorophyll. This is very, very important. Animals do not have chlorophyll, the green pigment in their body. Chlorophyll is very essential for making of food. And plants have this green pigment chlorophyll in their leaves. कहाँ होता है वो? Chlorophyll leaves में होता है, जो कि सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है. सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपका हो गया. फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज योर in trap sunlight, location is your in leaves, and it is present in green plants, only in green plants. And animals have finite growth, means stop growing after certain time. Plants keep growing throughout their life. Indefinite growth होता है plant का. ठीक है. उसके बाद एनिमल बॉडी जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ब्रांच नहीं होता. प्लांट कैसा होता है? प्लांट सपोज ये ब्रांच हो गया ऐसे ऐसे, इसका एक ब्रांच, इसका एक ब्रांच, ये प्लांट का ब्रांच होता है. लेकिन एनिमल बॉडी क्या होता है? स्ट्रेट होता है, कंपैक्टफुल होता है, मतलब एक प्लेन में होता है. उस प्लेन में खाली हमारा 2 ब्रांच, मतलब हैंड और लेग्स निकलते हैं. लेकिन प्लांट्स का बहुत सारे ब्रांच होता है. ओके, यूनिफॉर्म नहीं होता है प्लांट का बॉडी. ठीक है. 6th पॉइंट है रेस्पॉन्स. एनिमल्स जो होता है वो क्विक रेस्पॉन्स देता है, जबकि प्लांट बहुत ही स्लो रेस्पॉन्स देता है. तो ये जो 6 पॉइंट है उसको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस 6 पॉइंट्स आर very very important. Last point is animals give quick response but plants give slow response to stimuli. Now next part is your difference between living and non living thing, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने, आप एक बार पढ़ लो इसको पॉज करके. कुछ भी डाउट हो आप हमें बोल देना कमेंट्स. तो बेसिकली chapter is over. We have come to the end of the chapter and also the end of the day. So let's meet in the next class with a new topic. Till then, thank you, bye bye and take care. And the exercise discussion also we will do shortly. Thank you. Jai Jagannath.